हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे कंप्यूटर एप्टीट्यूड के माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जो 50 क्वेश्चन रहने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे ज्यादा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, अगर देखा जाए तो यहाँ पे अपन ने मोस्ट ऑफ द सभी टॉपिक कवर कर चुके हैं, और जो मिनिमम प्रैक्टिस जो है वो इवनिंग के टाइम अपन कर रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द जो इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी है वो अपन उसी में कवर कर रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं अलग से बनाऊंगा, वो मैं कल से यहाँ पे पोस्ट करना स्टार्ट करूंगा। प्लस मैं यहाँ पे इंग्लिश के भी मैं आपको डिस्क्रिप्टिव जो पेपर है उसके भी कुछ डिटेल्स दे दूंगा, ताकि उसकी भी आपकी हेल्प हो जाए। ओके, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको डायरेक्टली मिल जाए। ओके, कल से 3 दिन तक अपन इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। एंड देन 4 के बाद अगर मेरे पास डेटा कलेक्ट होता है पेपर का, तो वो भी मैं यहाँ पे पेपर आपको शेयर करूंगा कि पेपर का लेवल कैसे आ रहा है, कौन से क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं, तो वो भी मैं यहाँ पे आपको डिटेल्स में बताऊंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है अभी, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ विंडो रजिस्ट्री। तो विंडो रजिस्ट्री का प्राइमरी पर्पज क्या है? इट इज अ सेंट्रलाइज कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग। ठीक है, देखा, विंडो रजिस्ट्री इज a hierarchical database that store configuration, setting, and option for operating system and installed application. Okay, next, second, what does the command sfc/scan now do in window? तो आंसर है रिपेयर करप्ट सिस्टम फाइल। ओके, देखिए, सिस्टम फाइल चेकर, एसएफसी मतलब सिस्टम फाइल चेकर, स्कैन फॉर एंड रिपेयर करप्टेड फाइल ऑन सिस्टम, इंश्योरिंग सिस्टम इंटीग्रिटी। ओके, नेक्स्ट, थर्ड, विच प्रोटोकॉल इज प्राइमरी यूज्ड बाय विंडो रिमोट डेस्कटॉप। तो आंसर है यहाँ पे आरडीपी, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। ओके, इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड बाय विंडो रिमोट डेस्कटॉप फॉर रिमोट एक्सेस एंड अनर कंप्यूटर डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। मतलब अगर मुझे कोई अदर कंप्यूटर को अगर मुझे नेटवर्क में लेना है, अपने एंड से उसको एक्सेस करना है, तो उसके लिए अपन विंडो रिमोट डेस्कटॉप का यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं अपन स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन। नेक्स्ट, फोर्थ, in which directory is boot configuration data means bcd typically store। तो वो है यहाँ पे विंडोज बूट फाइल। ओके, जो भी अपने डेटा होते हैं, इसेंशियल फाइल्स जो होती है, जो कंप्यूटर स्टार्ट करने में, मतलब स्टार्टिंग बूट मतलब क्या करना, स्टार्ट करना, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं बीसीडी। जो फाइल होती है वो कहाँ पे रहती है? सी ड्राइव में, विंडोज के अंदर बूट फोल्डर रहता है, उसके अंदर यहाँ पे फाइल सिस्टम। ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ, what does the term PowerShell CMD let refers to? तो CMD let मतलब indirectly single function command in a PowerShell। ठीक है, देखिए, CMD lets is a PowerShell are lightweight command designed to perform single and specific function। Okay, next, six, what is the default file system used by Windows 10 for new installation? आंसर है यहाँ पे NTFS, New Technology File System. Okay, New Technology is a default file system for Windows 10, known for its support for large file and robust security. Okay, next, 7, what is the purpose of window task scheduler? आंसर है automate recurring task। ओके, देखिए, task scheduler automate the execution on specific task at predefined time or interval। next, 8, which window tools can be used to analyze disk usage and fragmentation? तो आंसर है disk defragmenter। ओके, देखिए, disk defragmenter analyze and optimize layout of file on hard disks to improve performance। ओके, नेक्स्ट, नाइन्थ, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ विंडोज ग्रुप पॉलिसी? तो आंसर है यहाँ पे कॉन्फ़िगर सिस्टम सेटिंग सेंट्रली। देखिए, ग्रुप पॉलिसी अलाउ एडमिनिस्ट्रेटर टू एनफोर्स सिस्टम वाइड सेटिंग एंड रेस्ट्रिक्शन अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर इन डोमेन, उसको बोलते हैं अपन विंडोज ग्रुप पॉलिसी। नेक्स्ट, 10th, व्हाट इज द पर्पज ऑफ जीपीयू जीपी अपडेट कमांड? तो जीपी अपडेट कमांड मतलब यहाँ पे होता है रिफ्रेश ग्रुप पॉलिसी सेटिंग। ओके, जीपी मतलब ग्रुप पॉलिसी। ओके, देखिए, इट्स कमांड यूज टू मैन्युअली रिफ्रेश ग्रुप पॉलिसी सेटिंग ऑन लोकल मशीन। नेक्स्ट, 11, what does Windows Sandbox features in Windows 10 Pro and Enterprise provide? तो आंसर है यहाँ पे an isolated environment to test application। Windows Sandbox का यूज क्या होता है? कोई भी अगर न्यू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, उसको अगर मुझे टेस्ट करना है, तो उसके लिए यूज करते हैं अपन विंडोज सैंडबॉक्स का। देखिए,
Windows Sandbox provide lightweight, isolated virtual environment where user can safely run untrusted application without affecting the host system. Okay. Next, 12. What is the primary purpose of BitLocker feature in Windows? तो BitLocker feature का concept क्या है? It is a full disk encryption. Okay, देखिए, BitLocker encrypt entire drives to protect data from unauthorized access, especially in case of physical theft. Okay, next, 13. What does the DISM tool primary used in Windows? तो DISM का यूज है डिप्लॉय एंड मैनेज विंडो इमेज. ओके, देखो, डिप्लॉयमेंट इमेज सर्विसिंग एंड मैनेजमेंट DISM is used to prepare, modify and repair window image, including those used for window recovery and setup. Next, 14. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विंडो फाइल परमिशन? तो देखो यहाँ पे फुल कंट्रोल, मॉडिफाई, रीड एंड एग्जीक्यूट एंड क्रिएट शॉर्टकट. आंसर है क्रिएट शॉर्टकट. बाकी जो है विंडो परमिशंस आते हैं जब अपन सिक्योरिटीज ऑप्शंस पे जाते हैं, तो यहाँ पे अपने को सिक्योरिटीज फुल कंट्रोल देना है, मॉडिफाई की देना है या फिर रीड एंड एग्जीक्यूट की देना है, तो वो वहां पे विंडो सिक्योरिटी के ऑप्शंस पे ये ऑप्शंस रहते हैं. ठीक है, देखो, while Windows allow you to create shortcut is not a file permission option on standard NTFS permission set. Okay. Next, 15. What does the chkdsk, okay, command do in Windows? chkdsk मतलब होता है स्कैन एंड रिपेयर डिस्क, चेक डिस्क. DSK मतलब चेक डिस्क. ओके, देखिए, स्कैन एंड रिपेयर डिस्क. ओके, chkdsk scan system file and disk for logical and physical error, attempting repair when possible. Okay, next, 16. Which features allows a window user to revert to previous state of the system? तो आंसर है सिस्टम रिस्टोर. ओके, देखिए, सिस्टम रिस्टोर allow user to roll back their system file setting and application to restore point. Next, 17. What is the primary use of event viewer in Windows? तो event viewer मतलब क्या होता है? View detail log of system event. देखिए, event viewer display detail log for system event, warning and error useful for troubleshooting. Okay, next, 18. In Windows, what is the purpose of netstat command? तो netstat command मतलब यहाँ पे होता है display network interface statistic. Okay, देखिए, the netstat command show the active network connection, listening port and protocol statistic. Next, 19. What is the maximum supported RAM in Windows 10 Pro 64-bit? तो आंसर है 512 GB. Okay, the Windows 10 Pro 64 support 512 GB of RAM, while the Enterprise Edition support up to 6 TB. अब अगर ये रैम का अगर कंसेप्ट अपने को पता है तो यहाँ पे मेमोरी साइज भी पता होगा. सबसे पहले बीट आता है, देन बाइट आता है, देन केबी आता है, देन एमबी आता है, देन जीबी आता है, एंड देन टीबी आता है, और अभी पीबी भी आता है, पीबी. ओके, तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है मेमोरी एलोकेशन का, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में या कौन सा साइज मेमोरी का सबसे कम है और सबसे ज्यादा, ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में. ओके, नेक्स्ट, 20. What does UAC, यूजर अकाउंट कंट्रोल, प्राइमरी डू इन विंडो? तो आंसर है यहाँ पे प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड सिस्टम चेंजेस. ओके, देखें, UAC prompt administrator approval when program tries to make changes that could affect the system security or configuration. Okay, next, 21. Which command is used to stop a window service from command prompt? तो आंसर है यहाँ पे net stop. ओके, देखो, net stop command stops specific service in window from command line. Okay, next, 22. What does the blue screen of death BSOD indicate in window? तो आंसर है यहाँ पे a critical system error. देखो, the BSOD occur when system encounter a critical error from which it cannot recover, often due to faulty hardware or software. Okay, next, 23. What is the purpose of window DXDIAG tool? Window diagnostic इसको बोलते हैं अपन. देखो, diagnostic direct X related issue. Okay, DXDI मतलब it provide detailed direct X component and drive on window system. Okay, next, 24.
Which window feature allows app to run across multiple virtual desktop? तो आंसर है यहाँ पे virtual desktops. ओके देखिए, virtual desktop allows user to organize open window and application across separate desktop environment. Okay, next 25. What is the role of window defender application guard? तो आंसर है यहाँ पे run on trusted website in isolation. ठीक है, देखें, application guard run on trusted website and content in an isolated virtualized environment to prevent potential security breaches. Okay, next 26. What is the main function of window Sentinel tool? Okay, process explorer. आंसर है यहाँ पे monitor detailed process activity. Okay, देखिए, process explorer is an advanced system tool that provide detailed information about running process, including resource and usage and handle. Okay, next 27. Which feature in Windows 10 allows file to access multiple devices by synchronizing with the cloud? तो आंसर है यहाँ पे OneDrive. Okay, OneDrive is a Microsoft cloud storage service that allow file synchronizing and sharing across devices. Next 28. Which Windows service is primarily responsible for managing update? अगर managing update अगर करना है तो Windows update service का अपन यूज करते हैं. ओके देखिए, the Windows update service manage downloading and applying update bits used to optimize the download process. Next 29. What is the purpose of window ready boost feature? Okay, ready boost feature मतलब indirectly plug and play जिसको बोलते हैं अपन, a USB drive as additional cache memory. ठीक है, देखिए, ready boost use external storage device like as USB drive as a additional to catch improve performance especially on system with the limited RAM. Okay, इसको बोलते हैं अपन ready boost मतलब plug and play. Next 30. Which of the following command is used to manage window firewall setting from command line? तो आंसर है net advanced firewall. ओके देखिए, net adv firewall command is used to configure and manage window firewall setting. Okay, next 31. What is the purpose of window feature Hyper-V? तो Hyper-V मतलब वर्चुअलाइजेशन. तो यहाँ पे देखो सेकंड है प्रोवाइड वर्चुअलाइजेशन कैपेबिलिटी. ओके देखिए, Hyper-V मींस वर्चुअलाइजेशन परफॉर्म दैट अलाउ यूजर टू क्रिएट एंड मैनेज वर्चुअल मशीन ऑन विंडो. वर्चुअल मशीन मतलब इमेजिनरी, जहाँ पे अपन मल्टीपल एक्टिविटीज क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टीपल विंडोज अपन इंस्टॉल कर सकते हैं, वो होता है अपना वर्चुअल मशीन. ओके, नेक्स्ट 32. What is the default TCP port used by window file sharing? तो आंसर है यहाँ पे 445. TCP पोर्ट अगर विंडो फाइल शेयरिंग का अगर देखते हैं तो वो कौन सा है, 445. देखो, सर्वर मैसेज ब्लॉक, SMB मतलब सर्वर मैसेज ब्लॉक typically use TCP port 445 for sharing over a network. Okay, next 33. Which tool is used in window to edit system environment variable? तो system environment के लिए अपन system properties का यूज करते हैं. ओके, system properties allows user to view and edit environment variable under the advanced tab. Next 34. What does the term paging file refers to in window? तो paging file मतलब क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी यूज टू सप्लीमेंट रैम. अपन कल भी अपन ने देखे थे कि अगर अपने पास रैम अगर 4 GB की है लेकिन एक्सटेंडेड अपन उसको अगर हार्ड डिस्क करते तो उसको पेजिंग भी बोल सकते हैं अपन. ओके देखिए, द पेजिंग फाइल पेज फाइल डॉट sys मतलब सिस्टम is used as a virtual memory to store data when physical RAM is full. Okay, next 35. Which of the following window log is used to track security event? तो आंसर है यहाँ पे security log. ओके देखिए, the security log record event related to system security such as login, attempt and policy changes. Next 36. What is the purpose of window credential manager? आंसर है यहाँ पे store and manage user credentials. ओके देखिए, credential manager store login credential like username and password for website application and network. Next 37. What does task kill command do in window? task kill command मतलब होता है टर्मिनेट करना कोई भी टास्क को. यहाँ पे देखो, terminate a running process. ओके,
A task kill command terminate the running process using their process IP or PID name. Okay, next 38. What is the purpose of window management instrumentation? Okay, तो आंसर है यहाँ पे प्रोवाइड डायग्नोस्टिक एंड मैनेजमेंट डेटा। विंडो मैनेजमेंट क्या करता है? डायग्नोस्टिक एंड मैनेजमेंट डेटा। देखो, WMI provide a standardized way to administrator and script to access system management information and configure setting. Next 39. What is the main purpose of local security policy tool? तो local security policy मतलब enforce security policy on local system. Okay, देखिए, the local security policy tool allows administrator to configure and enforce security related policy on a standalone and domain connected system. Next 40. What is the maximum file size supported by FAT32 file system in Windows? आंसर है यहाँ पे 4 GB। देखिए, FAT32 has a maximum file size limit of 4 GB and partition size limit of 2 TB. Okay. Next 41. Which command is used to create new partition in Windows? तो आंसर है यहाँ पे disk part. Okay. The diskpart command line tool is used to manage disk partition, including creating and formatting them. Next 42. What is the primary purpose of window deployment service? तो आंसर है यहाँ पे automate the deployment of Windows operating system. ठीक है, WDS is window operating system over network eliminating need to the physical installation media. Okay. Next 43. Which command display all running process in window फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट? तो आंसर है यहाँ पे टास्क लिस्ट। अगर पूरी की पूरी एप्लीकेशन अगर देखना है कि कौन सी रन हो रही है तो उसके लिए अपन यूज करते हैं टास्क लिस्ट कमांड। ओके, देखिए, टास्क लिस्ट कमांड ऑल करंटली डिस्प्ले रनिंग प्रोसेस ऑन अ विंडो सिस्टम। नेक्स्ट 44. व्हाट डज द विंडो सर्विस सुपरफेच डू? सुपरफेच क्या करता है? प्रीलोड फ्रीक्वेंटली यूज एप्लीकेशन इनटू द मेमोरी। देखो, Superfetch optimize system performance by preloading frequently used application into memory for faster access. Okay. Next 45. What is the primary function of Windows Remote Assistant tool? Answer है यहाँ पे allow remote troubleshooting of computer. Okay. देखो, remote assistance allow another user to remote access your system to troubleshoot issue or provide support. Next 46. What is the purpose of window to go feature? Window to go feature मतलब क्या होता है? Boot window from a USB drive. Okay, देखो, window to go allows user to create portable version of window on USB drive to use any compatible computer. Okay, मतलब use to go मतलब डायरेक्ट प्लग एंड प्ले वाला ही काम है जिसको अपन USB ड्राइव पे बोल सकते हैं। Okay? Next 47. Which PowerShell CMD late is used to retrieve the list of installed service? तो आंसर है यहाँ पे get service। ठीक है, the get service CMD late retrieve list of all installed service on Windows system. Next 48. What does the term driver signing in Windows refers? तो ड्राइवर साइनिंग मतलब होता है वेरीफाइंग एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ड्राइवर। देखो, driver signing ensures that the driver are verified and have been altered, providing additional system security. Next 49. Which protocol does Windows use for printer sharing? तो printer sharing के लिए अपन यूज करते हैं SMB। ओके, देखिए, Windows use SMB protocol for file and printer sharing over the network। उसके लिए यूज होता है 445। Next 50. What is the purpose of window recovery environment? तो आंसर है यहाँ पे recover and repair system error. Okay, window RE is a recovery environment designed to repair common system error, perform troubleshooting and restore functionality. Okay, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड अपन सॉल्व करेंगे। ओके, कल से ही सॉल्व करेंगे अपन इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम। तो कंटिन्यू वीडियो पे बने रहिए ताकि पेपर आपका इजी हो जाए। तब तक के लिए थैंक यू।